So Alina, how do you feel about coming to the best Banh place possible in the whole of Vietnam? Oh, I'm excited. Alright. Okay, let's see if Anila approves this. ये जो प्लेस है बान मी फोंग, ये जगह पूरे वियतनाम में बेस्ट बान मी सर्व करती है। तो अगर बान मी खाना है होयान में, बान मी फोंग जो जगह है ऐसी कुछ दिखती है, ये जगह बेस्ट बान मी सर्व करती है। आई थिंक रेट्स आर ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल, 20,000 से 30,000 के रेंज में। तो 70 रुपये से 100 रुपये के आसपास में सारे बान मी, और ड्रिंक्स भी यही रेंज में है। वाओ, यहाँ पे कोकोनट लस्सी भी है, विच इज़ क्वाइट इंडियन। They speak English. What is this? Coconut lassi. What is coconut lassi? Yeah. Coconut With yogurt? yogurt. Oh, okay. तो लस्सी मतलब वही है, कोकोनट लस्सी। भारतीय डिश भी यहाँ पे मिल रही है, पॉपुलर जगह। रेट ज़्यादा महंगे नहीं, 40,000 130 140 रुपये। अंदर चलते हैं, उसका फ़ोन देते हैं। Lucky for you, it was there. So Alina, how do you feel about coming to the best Banh Mi place possible in the whole of Vietnam? Oh, I'm excited. Alright. Okay, let's see if Anila approves this. ये लिया है मैंने beef egg banh mi at the best banh mi shop ever possible in all of Vietnam. ऐसा कुछ दिखता है ये। This is beef, this is omelette I guess, और थोड़ी सी सब्जियाँ। स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। So I've got this peach tea for 20,000 and this is for 30,000. So in total I'm spending 50,000, which is quite reasonable. टेस्ट करते हैं कैसा है। ऐसे इसमें रखते हैं, I don't know क्यों। The egg चीज़ के साथ और बीफ के साथ fabulous. Now I know best Banh Mi place क्यों बोलते हैं। Okay, so we ate the food. I liked it. I am in love with this place. What do you think about it, Alina? I really liked it too, but there could be less mint and a little bit more taste in the toast. But the chimichurri was amazing too. Okay. So there could be some things which could be changed for Alina, but for me it was fabulous. There was mint, but वो mint इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, मेरे लिए ठीक थी. But anyways, very good place, definitely recommendable. और जगह का नाम एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. Do check it out if you come to Hoi An.